Hey everyone, and I welcome you back to the series where we are trying to cover all the chapters of class 11th of book NCRT. So today we are on a very motivational chapter, that is, we are not afraid to die if we can all be together. Now, we have covered a lot of genres, like we have discussed a bit about a humorous poem that was A Tale of a Melon City, and then we have already covered a lot of chapters together in which we have covered a lot of genres as well. And today is the turn of a chapter that is going to prove as a motivation booster to you all, as it is a story of a sailor who, with his grit, courage, bravery, has proved that one can come out of all the adversities if we get support of our kith and kins and if we have a good willpower. So yes, of course, I'm sure of the fact that once this chapter is going to end, you will be brimmed with motivation, with a new charismatic grit, courage and bravery. So are you ready to start the chapter? I'm sure you are going to love it. Yes, before starting the chapter, I would like to tell you that this is a bit factual chapter. Like so many chapters we have covered so far, and they were quite interesting. They were having a sweet and engaging story outline. So I used to just narrate the story, and I hope you all used to enjoy. But this chapter is a bit factual, therefore I would like to request you all to take a notebook with you, and or if you want, you can also take the screenshot of the board. That's why I have tried to write down all the facts that you require to learn, to copy them down once you are going to sit in the examination. Alright, I hope you are done with the screenshot part. Yes, of course, जैसे जैसे मैं बोलूँ, try to take the notes as I've already said. Moving forward to the story of the chapter. Now this story is of, as I've already told you, the grit and valor and courage of a sailor who was a businessman and was happy, content and satisfied with his life. He was having a good business, a very happy and content family, but then he was having a deep hidden desire that he wanted to have a voyage. He wanted to replicate a voyage of the world that was being done earlier, like back 200 years back, by a captain named James Cook. He wanted to replicate that voyage. Alright, मैं इसको translate कर देती हूँ, हिंदी में भी translate करूँगी साथ साथ, so that you understand it in a better way, because I have got a request from a lot of students to be bilingual, so don't worry. I just said that this man, the protagonist of the chapter, he was having a dream. And what was he dream? कि वो पूरे वर्ल्ड का एक वोएज करना चाहता था, जो कि पहले भी हो चुका था. किसने किया था? कैप्टन जेम्स कुक ने 200 years ago. इतना मैंने अभी तक समझाया. Moving forward, once he was passionate about his dream, I think I want you all to write in the comment box what are your hidden desires or passion that you want to do in your life. I'm sure of the fact that all of us have some hidden desires that we will feel passionate for, that we want to do in this life, but then because of some reasons or the others we feel caged. हमें लगता है हम वो नहीं कर पाएंगे. At times because of family pressures, at times because of monetary needs, हम वो काम नहीं कर पाते हैं. But there are a few people on this earth who try to follow their passion. आप में से भी कुछ ऐसे होंगे. But yes, बहुत सारे ऐसे भी हैं जो अपना पैशन फॉलो नहीं कर पाते हैं because of some reasons or the others, and I am one of them. I feel passionate for painting. I want to draw, paint and sketch things, but then I don't get time to follow my passion, or you can say because of monetary needs, or because of giving you good content on YouTube and then earning for basic necessities. I feel trapped and मैं अपने पैशन को फॉलो नहीं कर पाती हूँ. आप में से
कितने ऐसे लोग हैं जो अपने पैशन को फॉलो कर पाते हैं? डू राइट इन द कमेंट बॉक्स. एंड जो नहीं कर पा रहे हैं वो भी अपना पैशन बताने के साथ साथ रीज़न बताइए कि क्यों नहीं कर पा रहे हैं. शायद हम एक दूसरे की हेल्प कर पाएँ. Probably it will act as a motivation booster for all of us. So moving forward to the chapter, the protagonist that we are going to study about in this chapter, the sailor or the captain, is a person who is 37 years old, happy in his life, having a good business, having a happy and satisfied family. But after 37 years of living on this earth, one day he felt that I want to follow my passion. And his passion was to replicate a voyage. Voyage क्या होती है? सी की यात्रा, राइट, जो हम समुद्र से यात्रा करते हैं. सो एक ट्रैवल करना चाहता था वो पूरे वर्ल्ड को सी से, सी रूट, वाया सी रूट, राइट. सो दिस इज समथिंग दैट ही यूज टू फील पैशनेट फॉर. बट हम जो ऐसा नहीं था कि पैशन है तो चलो एक तरफ रखा, अभी आप बेसिक नेसेसिटीज़ में अपने आप को एंग्रॉस करके रखे हुए हो. नहीं. At the age of 37, he felt that I want to follow my passion. भगवान ने एक ही जन्म दिया है, कब तक ऐसे ही सोचता रहूँगा कि पैसा आ रहा है, घर चल रहा है एंड ऑल, एक सिंपल लिविंग. कुछ करना है. जो मेरे हमेशा से मन में था वो अब करूँगा, फिर चाहे जीऊँ या मरूँ. This is a very good sign. That's why at the beginning of the chapter I said that this is going to act as a catalyst to your goals, to your motivation. So moving forward, once he decided that he is going to replicate round the world voyage that was already being done 200 years ago by Captain James Cook, he spent 16 long years in honing his seafaring skills. He spent all his leisure time. Leisure time means enjoyment wala time, like Sundays we can take or gazetted holidays. What do we do in our leisure time? We enjoy television or movies, or we go and hang out with friends, right? What do you do in your leisure time? Do write us by using the comment box. So, but if we talk about this captain, he never wasted his leisure time. मीन्स खाली समय कभी वेस्ट नहीं किया. रैदर ही यूज्ड इट इन होनिंग हिज सी फेयरिंग स्किल्स. होनिंग मीन्स शार्पनिंग. उसने अपनी सी फेयरिंग स्किल्स को शार्पन करने के लिए उन 16 ईयर्स को यूज़ किया. सो दैट सिंपली सिग्निफाइज दैट ही इज़ नॉट अ पर्सन हु इज़ क्रेजी फॉर हिज ड्रीम और एक बार मन किया और निकल लिया. नो, ही इज़ अ काइंड ऑफ अ पर्सन हु इज़ मैनेज्ड, हु हैज़ actually planned his voyage that he wants to do, who is organized, we can say, because he is obviously is sure of the fact that once he'll be in the ship or once he will start his voyage, he'll be with his family. So he does not want to take risk with the lives of his family as well. That's why he was much prepared, or we can say organized, that he spent 16 years in sharpening his seafaring skills. मतलब स्विमिंग सीखी होगी शायद, अगर शिप खराब हो गई तो कैसे ठीक करेंगे, शिप को चलाना, हर एक चीज़ की प्रॉपर ट्रेनिंग नॉट ओनली उसने खुद ली बट अपनी वाइफ को भी दिलाई. बिकॉज कोई भी एडवर्सिटी आ जाए तो उसके लिए वो प्रिपेयर रहें. इससे हमें पता चला दैट ही वॉज एन ऑर्गेनाइज्ड मैन. ऐसे ही जैसे बहुत हम जैसे लोग होते हैं, कभी कभी मन करता है कि अरे ये हमारा पैशन है, चलो भाई बाइक उठाई, बाइक सीखनी है, बाइक उठाई और चल दिए. गिर जाओगे और कभी ज़िंदगी में फिर वो काम कर नहीं पाओगे. एक आध हड्डी टूट गई तो ज़िंदगी भर डर लगा रहेगा, एक फोबिया बैठ जाएगा अंदर, राइट. सो पैशन होना ज़रूरी है, पैशन को फॉलो करना अच्छा है, लेकिन विद अ प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, सब कुछ रखकर देन ट्राई टू फॉलो योर पैशन. ऑब्वियसली यू विल गेट सक्सेस. ऐसे ही चल पड़ोगे विदाउट एनी ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर तो प्रॉब्लम हो सकती है. तो हमने अभी क्या सीखा हमारे प्रोटैगनिस्ट से? that yes, he was passionate and also he was intelligent enough to know how to organize the plan or structure out the plan to follow his passion. So he spent how many years? 16 long years in improvising his seafaring skills, in honing his seafaring skills. Moving forward, in 16 long years एक बोट बनाई, एक शिप बनाई. आप सबने टाइटैनिक देखी होगी, राइट? इफ yes, then you will be able to relate
that particular movie to this chapter, और आप imagine कर पाएंगे in a better way. So the name that they gave to their ship is Wave Walker. Now let's discuss about this ship Wave Walker. It is 23-meter long and 30 tons. It is weighing 30 tons. Now I want you all to write down all these facts in your notebooks. That's why I have tried to fill the board so that you can take down all the facts. As I've already said that it's a factual chapter. You need to write down all these things in your answers. So the name of the book is name of the ship is Wave Walker, and it is 23-meter long and it weighs 30 ton. And yes, ऐसी कोई ship नहीं बना दिया. As I've already told you that he was an organized man. So he tested that ship in the roughest weather. मतलब उसको टेस्ट किया रफेस्ट वेदर में ले जाके बार बार, not only once, again and again, and then he took the help of professionals to make this boat so that it can sustain in the roughest and the toughest weathers, right? So now after testing it, after getting it built by the professionals, after having trials, after honing his seafaring skills, his wife's seafaring skills, when after 16 long years he felt prepared, then now I'm ready to set the sail. उसने अपना सारा बिजनेस, घर, सब कुछ छोड़ दिया. And he took a very big decision of his life, or we can say the biggest decision, कि वो अपने बच्चों और वाइफ के साथ एक राउंड द वर्ल्ड वॉयज करने के लिए रेडी है. इट इज़ सो डिफ़िकल्ट. आप खुद सोचो, एक वन फाइन मॉर्निंग यू वेक अप एंड यू फील लाइक कि मैं अपना घर, परिवार, सबको लेकर एक ऐसी वॉयज के लिए जा रहा हूँ जिसके अंदर 80% प्रोबेबिलिटी है दैट आप नहीं बचोगे. 200 साल के बाद जितने भी लोगों ने ट्राई किया है, कोई भी सक्सेस नहीं ले पाया. सो यू नो द फैक्ट दैट यू आर गोइंग टू गिव योर हैंड इन अ लायंस माउथ एंड स्टिल यू आर रेडी टू डू दैट. दिस इज कॉल्ड करेज. सो येस, वी आर स्टडिंग अ स्टोरी ऑफ अ मैन who was full of valor and grit, and now he has taken the most courageous decision of his life that he is ready to set the sail. उसने अपनी वाइफ, बच्चों, सबको शिप पे बिठाया and sail start करी. What do you feel now? Do write in the comment box. क्या ये सही सलामत अपनी पूरी जर्नी बिता देंगे या कुछ मिसहैप हो सकता है? What do you feel? ट्विस्ट बना रहेगा, पिक्चर अभी बाकी है दोस्त. आगे जानते हैं. July 1976 was the time when they set their sail. Name of the wife is Mary, and he has a son named Jonathan who is 6 years old, daughter named Suzanne who is 7 years old. Taking all of them on the ship, he was ready to set the sail. Now we are going to study the first leg of the journey. The first leg of the journey was from west coast of Africa to Cape Town. I repeat once again, west coast of Africa to Cape Town. And that went really well. It was all smooth. The journey was really perfect, fine. That acted as, a motivation, or acted as a, pleasant experience in their life. They enjoyed it. But कहानी इतनी स्मूथ नहीं है जितनी आपको लग रही है. Now came the time of the second leg of the journey, and as I've already told you that they have done a lot of R&D, like lot of research. 16 long years they spent on the research and on honing their skills. So they know the fact that the second leg of the journey is going to be a bit troublesome, because now they are going to enter southern Indian Ocean, and southern Indian Ocean is considered to be the roughest ocean, where you face high tides and strong gales. So they were quite prepared and also scared of the fact that they are going to enter the lion's den now. मतलब वो शेर के डेन में घुसने वाले हैं, शेर के घर में जाने वाले हैं, शेर के मुंह में हाथ डालने वाले हैं. सो वो जानते थे कि अब वो खतरों के बहुत पास आने वाले हैं. अब उन खतरों से खेलना है,
खतरों के खिलाड़ी बन के निकलना है, उसके लिए ऑब्वियसली ये प्रिपेयर्ड है, बट फिर भी डर तो लगता ही है, राइट? इंसान है, बट डर के आगे क्या है? जीत। एब्सोल्युटली राइट। तो ऐसा ही कुछ इन्होंने सोचा कि डर के आगे जीत है, डरना नहीं है, आगे बढ़ना है, एंड इन्होंने सेकेंड लेग ऑफ द जर्नी स्टार्ट करी. But before that, as I've already told you, this man was really organized and he used to use his wits. दिमाग यूज करता था. Therefore, he took a decision that before moving to the second leg of the journey, he is going to take help of two professionals, because he was prepared that they can meet a few disasters in this area. So अगर कुछ ऐसा डिजास्टर आए तो मैंने आपको पहले कहा प्लान बी प्लान सी रखें, तो इसने एक प्लान बी रखा हुआ था कि दो प्रोफेशनल्स को रख लेते हैं टू टेक देयर हेल्प इन केस if they require anywhere. So now, name of the two professionals are, first is Larry Vigil, he was an American, and the second is Herb Siegler, he was a Swiss man. So now both of them were the professionals and they were perfect in seafaring skills. So now in case if they meet any disaster, there he will not be alone. उसके साथ दो प्रोफेशनल्स होंगे, एंड देन वाइफ मैरी इज ऑल्सो ट्रेन्ड, एज आई हैव टोल्ड यू, 16 years, याद है? So all right, moving forward. So on the second leg of the journey, Southern Indian Ocean, he has two professionals with him and they have started their sail. They reached 3,500 kilometers east of Cape Town on December 25. Now, from the second day of their journey in the Southern Indian Ocean, they started facing strong gales and high tides and low tides. They could sense the danger. But then, yes, of course, they were prepared for it and they were, setting their sail with a few safety measures. 3,500 kilometers east तक का सफ़र ठीक ठाक तय हुआ. But yes, of course, they were facing a few troubles, but then जैसे कैसे मैनेज हुआ. Till December 25, it was quite fine, like not that good, but काम चल रहा है. डरे हुए हैं ये, strong waves आ रही हैं. December 25, they celebrated Christmas and they were happy in a happy-go-lucky mood. And then, of course, January 1st, New Year, they all celebrated it together, because we can have a lesson from this chapter, that once we are with our kith and kins means relatives or close friends or acquaintances or your siblings with whom you're close, with this support you can win any adversity, you can come out victoriously from any adversity. So this is something that we can see. Instead of being in the roughest weathers, instead of knowing the fact that they can face danger anytime, they were sensing the approaching death, still they were enjoying. They had a happy-go-lucky moment on December 25 and a few moments till New Year Eve, 1st January. They were enjoying with their kith and kins, but then came January 2. Now January 2 is going to prove as a curse in their journey, in their whole journey yet. What happened? Now let's see what happened on January 2. They started facing gigantic waves. Now from gigantic waves we mean, the length of their main mast was up to 15 meters. Now the height of the waves, that was really alarming. The waves were surpassing 15 meters. 15 meters was the height of their sail, the main mast. Now the waves started surpassing the height of the main mast, that was 15 meters. That was a bit alarming. Now let me explain it again. Let's see, अगर यहाँ से बहुत तेज waves आ रही हैं with monstrous pressure, then as we have discussed that the boat was professionally built, so boat could maintain the balance because professional roughest weather, toughest weather के लिए perfect थी. यहाँ से बहुत तेज वेव आई, then also boat will survive. But I would like you all to use your wits and think of the fact, if any wave goes vertical
and all the water comes back on the ship, तब शिप क्या कर सकती है? कितना भी प्रोफेशनली बना लो, पानी ऊपर आ जाएगा, ऑब्वियसली द वेट ऑफ द शिप विल इंक्रीज एंड द शिप विल स्टार्ट सिंकिंग. आई होप यू कुड रिलेट इट टू द टाइटैनिक, राइट? सो that's what exactly the problem was on January 2nd. What happened basically? The gigantic waves started terrorizing them. As I've already said, that the pressure or the intensity of the waves was not the matter of trouble. The matter of trouble was the height of the waves, जो मेन मास्ट से भी ऊपर जा रही थी, वो थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक था. और कह रहा है कि जैसे आपने हॉरर मूवीज़ में देखा होगा, तो थोड़ा सा टेरर का सीन बनाने के लिए हवा आती है तो बड़ी तेज़ आवाज़ आती है हवा में से, दैट श्रिल साउंड, जिससे थोड़ा सा हॉरर का एटमॉस्फेयर और बढ़ जाता है, राइट? पहले ही हम डरे हुए होते हैं और वो हवा की साउंड दैट डबल्स आर टेरर. सो सिमिलरली कह रहा है जो स्क्रीमिंग साउंड ऑफ द वेव्स, वो जो स्क्रीमिंग साउंड थी वो और ज़्यादा हमारे टेरर को मल्टीप्लाई कर रही थी. सो that was something that was acting as a catalyst in our terror. So moving forward, now we tried all our efforts. We could sense the approaching disaster. मैं, लैरी, हब, हम सब समझ पा रहे थे कि डिज़ास्टर आने वाला है, कुछ प्रॉब्लम हो सकती है. Therefore we all started working on it. क्या क्या करना शुरू किया? हमको लगा जैसे तूफान आ रहा है तो बोट को स्लो डाउन, शिप को स्लो डाउन करना चाहिए. एंड टू स्लो डाउन द बोट, ये सब पॉइंट्स आप कॉपी में लिखेंगे. वी ड्रॉप द स्टॉर्म जिप, we lashed a heavy mooring rope in a loop across the stern, we double lashed everything, मतलब बांध लिया अपने आप को हर जगह से. वी वेंट थ्रू द लाइफ राफ्ट ड्रिल्स, जो भी इनके पास लाइफ सेविंग लाइफ राफ्ट ड्रिल्स थी वो सब इन्होंने एक्टिवेट कर ली. जितनी भी इनके पास अटैच्ड लाइफ लाइन्स थी बचाने के लिए, जो भी ये सामान साथ में लेके आए थे, वो सब बाहर निकाला. और डोंट ऑयल स्किन्स एंड लाइफ जैकेट्स पहन ली उन्होंने अपने आप को सेव करने के लिए. आई होप आप लोग राफ्टिंग वगैरह पे होंगे, आपने देखी होंगी वो लाइफ जैकेट्स जो आपको सेव करती हैं फ्रॉम ड्राउनिंग. इवन आफ्टर प्रिपेयरिंग देमसेल्व्स विद ऑल द सेफ्टी मेजर्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम द अप्रोचिंग डिजास्टर्स, they were somewhere or the other deep in the heart praying to God that they should not face any disaster. But भगवान के आगे कौन जीत सकता है? This is something we also do. We all keep ourselves prepared for any approaching disaster. जैसे घर को earthquake proof बनाते हैं और बहुत सारे disaster management ड्रिल्स सीखते हैं कि कभी ऐसा कुछ हुआ तो हम प्रिपेयर्ड रहें. बट देन क्या हम कभी चाहते हैं ऐसा हो? ऑब्वियसली नहीं. वी ऑल प्रे टू गॉड कि कभी कोई डिज़ास्टर फेस ना करना पड़े. सिमिलरली ऑल्दो दे वर प्रिपेयर्ड, बट देन समवेयर डीप इन द हार्ट दे वर प्रेइंग टू गॉड कि ऐसा कुछ ना हो. बट क्या कोई डिज़ास्टर आया होगा? आपको क्या लगता है? क्या इन्होंने ऐसी कोई सिचुएशन फेस करी होगी जो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये कर सकते हैं? दैट्स वाई दे आर प्रिपेयर्ड विद द लाइफ जैकेट्स एंड एवरीथिंग. अनफॉर्चुनेटली यस. शाम को 6 बजे विंड ड्रॉप्ड, स्काई डार्क. लाइक आपने सुना है तूफान से पहले की शांति वाला कोटेशन और प्रोवर्ब, तो ऐसा ही कुछ इनके साथ हुआ. इट वॉज ऑल साइलेंस. सडनली it grew silent, wind dropped, because we were just discussing like a few minutes back. हम डिस्कस कर रहे थे कि बहुत तेज़ वेव्स हैं, 15 मीटर्स तक की हाइट है वेव्स की. सडनली everything stopped. Sky grew dark, wind stopped. एकदम शांति है, extreme silence. समझ पा रहे हो? तूफान से पहले की शांति कुछ ऐसी ही थी. फॉर अ फ्यू मिनट्स इनको लगा शायद सब शांत हो गया, शायद भगवान ने हमारी सुन ली. बट कुछ ही मिनट बाद एक ऐसी वेव आई जिस वेव ने इनकी अभी तक की सारी स्मूथ जर्नी को ख़राब कर दिया.
That was a gigantic wave, twice the height of others. We were just discussing that they were quite troubled with the height of the waves, and that height, all those waves were rising up to 15 meters. Right? जो कि उनके मेन मास्ट जितनी हाइट थी 15 meters. But now this wave is double the height of all the waves that were troublesome to them. So 15 meters से भी डबल है, तो ऑब्वियसली बहुत परेशानी कर सकती है. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, लेट्स से दिस इज द शिप एंड दिस इज द मेन मास्ट 15 मीटर्स तक का, एंड जो अभी वेव्स आ रही थी वो 15 मीटर्स तक की आ रही थी. सो दे वर अ बिट टेरिफाइड और पेट्रिफाइड. बट देन सडनली एक वेव आती है जो कि लेट्स से दिस इज द 15 मीटर हाइट, जो कि इससे डबल है 30 मीटर्स. और जब वो वर्टिकल वेव वापस आएगी तो पानी कहाँ आएगा? शिप के डेक पे. इतना सारा 30 मीटर वेव है, ऑब्वियसली देयर विल बी लॉट ऑफ वाटर इन इट, एंड व्हेन ऑल दैट वाटर विल गेट इनटू द शिप, व्हाट विल हैपन टू शिप देन? ऑब्वियसली द चांसेस ऑफ सिंकिंग द शिप विल इंक्रीज. शिप का वेट बढ़ेगा, पानी आएगा सारा, एंड देयर विल बी डिस्ट्रक्शन एज वेल. ऐसा ही कुछ इनके साथ हुआ. एक वर्टिकल वेव gigantic वर्टिकल वेव at 6 PM hit the ship and it damaged it brutally. एक बहुत तेज एक्सप्लोजन हुआ, जैसे कोई बॉम्ब ब्लास्ट हुआ हो. एंड जब तक वो थोड़ा बहुत होश संभाल पाए, तब तक क्या था? कैप्टन badly injured, the protagonist of the chapter, he was badly injured. His head smashed the wheel में जाके लगा बहुत तेजी से, and because of the pressure of the water he flew overboard. बोट से नीचे गया and sank below the waves, और डूब गया है नीचे. And he is getting dizzy, he is feeling himself unconscious, and he has expected his approaching death. He's quite sure that in a few minutes he's going to die. Because of lack of oxygen, he could feel that he's getting dizzy and he's feeling dizziness and he's getting unconscious. So now, कुछ ही मिनट में जब उसे लग रहा है मैं मरने वाला हूँ, he has expected his approaching death. Unconscious हो गया है, prepared है. कहते हैं ना, अच्छे लोगों के साथ हमेशा भगवान होता है. क्या आपको लगता है कोई मिराकल हुआ होगा? Because the situation of the ship wave walker right now is that the ship has become horizontal. Main mast is in horizontal position, means ship पूरी waves की वजह से इस तरह से झुक चुकी है, और हमारा कैप्टन पानी में डूब चुका है, एंड उसको बहुत डिजीनेस फील हो रही है, एंड उसको थोड़ी देर में लग रहा है कि वो मरने वाला है. सडनली एक मिराकल हुआ, चमत्कार. भगवान है भाई कहीं ना कहीं अच्छे लोगों के साथ. एक बहुत तेजी से वेव आई जिसने इस हॉरिजॉन्टल हुई शिप को हिट किया और अपराइट कर दिया. आई रिपीट वंस अगेन, एक मिराकल हुआ कि एक बहुत तेजी से वेव आई और उसने हिट किया शिप को एंड वर्टिकल कर दिया वापस. नाउ जो मेन मास्ट हॉरिजॉन्टल हो गया था, वेव वॉकर सिंक करने वाली थी, डूबने वाली थी, सडनली मिराकल हुआ, एक वेव ने हिट किया जिसने शिप को अपराइट कर दिया. जैसे ही शिप अपराइट हुई, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू अ फ्यू मिनट्स बैक कि इन्होंने अपने आप को पूरा लाइफ ड्रिल्स के साथ प्रिपेयर्ड कर लिया था, जिसमें इन्होंने अपने आप को रोप से डबल लैश किया था. याद करो, हमने अभी याद किया था, अभी डिस्कस किया था. दे डबल लैश हिमसेल्फ, अपने आप को अच्छे से बांध लिया था. सो ही काइंड ऑफ डबल लैश्ड हिमसेल्फ विद अ रोप एंड ही टाइड इट विद द शिप. सो द मोमेंट शिप गॉट अपराइट, तो आप इमेजिन करो सीन, मैं आपको एक थोड़ा सा विजुअलाइज करने की कोशिश करती हूँ कि लेट्स से यहाँ पे शिप है एंड शिप की वजह से मैं पानी में सिंक हो गई हूँ. अगर शिप सीधी होगी तो रस्सी खींचेगी, मैं भी ऊपर की तरफ आऊँगी, राइट, क्योंकि मैंने अपने आप को रस्सी से बांधा हुआ है. सो जब शिप सीधी हुई तो रस्सी के प्रेशर से मैं भी खींची और मैं सीधा शिप की तरफ आई. एंड कैप्टन यूज्ड हिज विट्स, ही ग्रैब्ड द गार्ड रेल्स, उसने शिप की गार्ड रेल्स को पकड़ा और ऐसे हवा में उछालता हुआ शिप के अंदर वापस से आ गया. Like a superhero, no?
So captain grabbed the guardrails, sailed through the air into the boat, वापस से बोट में एंट्री करी हीरो की तरह, and now he is not only physically hurt, also emotionally totally shattered, because इसने अपना एक्सपीरियंस देखा कि ये मौत के मुंह से निकल के आया. ही इज़ नॉट श्योर वेदर हिज फैमिली इज सेफ और नॉट. बच्चे, वाइफ, whether they are even alive or not. So can you imagine his situation, how emotionally shattered he is, not only emotionally but physically as well, because his ribs are cracked, whole rib cage is broken, सारी ribs टूट चुकी हैं, teeth broken, and the whole mouth is full of blood. When we get a small cut in any part of our body, I hope you can imagine how troublesome we feel whole day. हमारा ध्यान बार बार उस छोटी सी चोट पे जाता है. Now you imagine his situation. एक हड्डी टूटने पे तो इंसान पागल हो जाता है, सारा रिब केज टूट चुका है, सारे दांत टूट चुके हैं, थोड़ा सा भी दांत में दर्द होता है, कैविटी. अगर किसी को कभी हुआ होगा तो आई होप यू कुड रिलेट हाउ पेनफुल इज इट. बट सिचुएशन जिसमें इस समय प्रोटैगनिस्ट, नैरेटर, कैप्टन है, वो इमेजिन करके देखो. सारा रिब केज टूटा है, सारे दांत टूटे हैं, मुंह पूरा खून से भरा है, दिमाग कितना परेशान होगा. वे डोंट इवन नो वेदर योर फैमिली इज सेफ और नॉट, वेदर योर चिल्ड्रन, योर वाइफ इज सेफ और नॉट, वेदर इवन दे आर अलाइव और नॉट. इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन कोई भी इंसान टूट जाएगा. He'll be in a breakdown situation. But as I said in the starting of the chapter, that this story is, is going to tell you how courage, bravery and grit can get you back from the jaws of the death. And this man is an epitome of that. He's an epitome of valor, epitome of courage. See how he showed his strength, not only Captain, but also Larry and Herb. Remember the two professionals who were there on the boat when they started their journey in the second phase of the second leg of their journey. So they were also showing their strength, how they were trying to pump out the water of the ship, because you can really imagine अगर पानी शिप में रहा so वो शिप का वेट बढ़ाएगा एंड शिप सिंक होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी. Therefore they were continuously trying to pump the water out of the ship. जब हमारा कैप्टन वापस आया तो उसने देखा शिप पर, सबसे पहले उसने क्या किया, उसने मेन व्हील को हैंडल किया. He didn't care about Larry and Herb and wife and children. सबसे पहला उसको जो दिखा उस समय ये कि that I'll have to manage the direction of the ship. अगर ये astray off the track चला गया, इस समय हमने इसको मैनेज नहीं किया तो सब के सब, अगर कोई बचा भी होगा तो वो मर जाएगा. So he used his wits. इसकी जगह कोई और होता शायद इमोशनल होके एकदम से चला जाता बच्चों से, फैमिली से मिलने, whether they are even alive or not. But then he didn't do that. He was prepared. He was, as we have already discussed, that he was an organized man. इसको समझ आ रहा था इस समय क्या need of the hour है. And at that particular time the need of the hour was to manage the wheel. While he was doing so, he was so mentally and emotionally tattered and he was broken, and he wanted to know whether everybody is safe or not. Suddenly Mary की entry हुई, the wife, and Mary shouted at him that we are sinking, that there is a huge disaster that we have just faced, and what will happen next. See the courage or the grit of the captain, that he did not utter a single word of what he suffered. नहीं बताया अपनी वाइफ को कि कितना दर्द हो रहा होगा या मैं कैसे अभी मौत के मुंह से निकल के आया हूँ. रादर चुपचाप अपनी वाइफ को क्या बोला, that you please come and take over the charge of the wheel, because we know that they both were professionally trained. Remember in the starting of the chapter we discussed that for 16 long years they prepared themselves
they honed their skills, right? So Mary was also professionally trained. जैसे ही मैरियस ने बोला that you please take over this wheel and handle it because मेरी ज़रूरत इस समय ज़्यादा अभी शिप का पानी निकालने में है. अगर शिप से पानी नहीं निकाला तो सब डूब जाएंगे, right? So he handed over the wheel to the Mary and after that उन्होंने उसको क्या लगा, अभी इस समय क्या ज़रूरत है मुझे सबसे पहले ये देखने की कि मेरे बच्चे सेफ हैं या नहीं. He half swam, half crawled to the children's cabin. बच्चों के केबिन में गया and inquired about their well-being. He got to know that the daughter is not pretty well. She's got a big bruise on her head. Her head was swollen. But then he was satisfied with the fact that at least they're alive. So he thought, बाद में देख लेंगे, छोटी मोटी चोट है. The first thing that I need to do right now is to get the water out of the ship. तो उसने उसी समय फटाफट हैमर उठाया, स्क्रू उठाई, कैनवस उठाया, कुछ और सामान उठाए जिनसे वो सारे इक्विपमेंट्स उठाए जिनसे वो शिप के होल्स को अभी बंद करेगा. बिकॉज undoubtedly Larry and Herb were working out to pump the water out of the ship, but then what is the use of that hard work when there are lots of holes or lots of cracks in the ship from where water is still coming inside. कितना भी पानी बाहर निकालो फिर से अंदर आएगा. So technically if you use your mind, the requirement of the time is to fill all those gaps first, then pump water out of the ship. Otherwise आप कितना बाहर निकालते रहो होल से फिर अंदर आता रहेगा. So that hard work is of no use. So now the captain used his wits and he did all the necessary repairs. He started his work of doing all the necessary repairs where he managed to stretch the canvas. Canvas is a cloth जो कि हम कहते हैं कि waterproof होता है, जो कि पानी अंदर आने से रोकेगा. So he stretched the canvas and secure waterproof hatch covers across the gaping holes. जो भी गैपिंग होल्स थे उसमें वाटरप्रूफ कवर लगाए, सारे कैनवस क्लोथ लगाया सो दैट पानी अंदर आने से रुके, जो कि सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट थी अभी की. एंड व्हेन ही got success in covering all the holes, now he started working on getting the water out of the ship. But प्रॉब्लम सिर्फ एक नहीं थी कि शिप में पानी ही था, अभी और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो इस समय बहुत ट्रबलसम है इनके लिए. जिसमें से सबसे पहली प्रॉब्लम क्या है, दे वर यूजिंग हैंड पंप्स to get the water out of the ship, because जो electric pumps थे, because of this tremendous monstrous huge wave, everything got smashed. Now have you ever witnessed the situation of a town or of a country or a place after a natural disaster? Yes, exactly वही situation थी इस समय शिप की. कहीं क्लोथ्स बिक रहे हैं, कहीं खाने के ईटेबल्स बिक रहे हैं, मतलब everything was scattered and जितना भी इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड चीज़ें थी सब शॉर्ट सर्किट हो गया था. तो देयर वाज अ ह्यूज डिस्ट्रक्शन ऑल अराउंड. So what Larry and Herb were doing, they were using hand pumps to get the water out of the ship. क्योंकि bucket और mug से करना तो makes no sense because पानी बहुत ज़्यादा है. So they were using hand pumps क्योंकि electric pumps short circuit हो गए हैं. But अगर कहीं, मैंने अभी आपको सिचुएशन बताई कि हर जगह एक वर्ड होता है जब हमारे यहाँ नेचुरल डिजास्टर आता है कि सब चीज़ें क्या बन जाती हैं. हिंदी में एक वर्ड होता है, लेट मी सी कौन जवाब देता है, मलबा, राइट. इन इंग्लिश वी कॉल इट डेब्री, DEBRIS, द प्रोनाउंसिएशन इज डेब्री. सो जैसे हमारे नेचुरल डिजास्टर के बाद सब मलबा बन जाता है, ऐसे ही उनकी शिप पे इस समय डेक पे सब मलबा दिखाई दे रहा था. कहीं क्लोथ्स तो कहीं खाने के सामान, कहीं कुछ पड़ा है, सब कुछ टूट चुका है, स्कैटर्ड है, टैटर्ड है. तो जो डेब्री पानी के साथ साथ मिल रहा था when they were using that hand pump, now what happened basically, पानी के साथ वो सब मलबा भी आ रहा था, that blocked the hand pump. Now that's the next problem that they started facing. Both the hand pumps are blocked. What to do next? पानी हाथ से तो निकालेंगे नहीं, इलेक्ट्रिक पंप्स शॉर्ट सर्किट हो चुके हैं, हैंड पंप्स ब्लॉक हो गए विद डेब्रीज. नेक्स्ट प्रॉब्लम दैट दे फेस्ड वाज जितने उनके हैंड पंप्स थे वो दे स्टार्टेड सर्चिंग फॉर व्हाट टू डू नेक्स्ट.
सडनली उसके दिमाग में आया कि एक 2 स्पेयर हैंड पंप्स पड़े हैं, ये सब कौन दिमाग यूज़ कर रहा था? हमारा कैप्टन. ही वेंट एंड गॉट दोज 2 स्पेयर हैंड पंप्स एंड आफ्टर दैट उसके दिमाग में एकदम से आया, यस, चार्ट रूम में भी एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिक पंप रखा था बिकॉज दे वर प्रिपेयर्ड फॉर ऑल द एडवर्सिटीज. देन ही वेंट एंड गॉट दैट इलेक्ट्रिक पंप बट एंड कनेक्टेड इट टू द आउट पाइप एंड लैरी एंड हब को काम पे लगाया पानी बाहर निकालने के लिए. बट प्रॉब्लम्स अभी ख़त्म नहीं हुई, अभी और भी प्रॉब्लम्स हैं. नाउ दे स्टार्टेड गिविंग मे डे कॉल्स. मे डे कॉल्स एमरजेंसी कॉल्स होती हैं, जो आप कहीं फंस गए हो तो आप कनेक्ट कर सकते हो अपने रडार से. सो दे स्टार्टेड गिविंग मे डे कॉल्स बट they got no reply because they were in some remote area of sea. तो obviously they were even expecting no replies. कोई reply नहीं आया जो emergency calls दे रहे थे for help, but no reply. Now problems अभी भी ख़त्म नहीं हुई हैं. The daughter Sue is badly hurt. अब तक उसकी situation क्या है? Her head is swollen, eyes enormously black क्योंकि काली हो गई हैं, क्योंकि लगा है बहुत तेज, and deep cut on her arm. तो प्रॉब्लम्स का पहाड़ आ चुका है. सॉल्यूशन कोई दिख नहीं रहा है बिकॉज दे आर मिडवे इन अ सी वेयर दे कुड सी nobody around to help. Even mayday calls, they got no reply of them, and then there is no island nearby. कहाँ जाएं, कहाँ ना जाएं? आपको क्या समझ आ रहा है इस समय? क्या ये लोग बचेंगे या नहीं? चांसेस कम लग रहे हैं बिकॉज शिप इज सिंकिंग, इट इज़ फुल ऑफ वाटर. कितना भी आप कैनवस, क्लोथ्स, वाटर प्रूफ हैट्स लगा लो, ज़्यादा टाइम सरवाइव नहीं कर पाओगे. इनकी तो जर्नी बहुत लंबी थी. इस टूटे फूटे शिप से कहाँ तक जा पाएंगे? क्या ये लोग अपनी जान बचा पाएंगे या नहीं? जानने के लिए पिक्चर अभी बाकी है. नाउ द प्रॉब्लम्स वर इंक्रीजिंग विद अ ग्रेट पेस. Simultaneously their hard work was also increasing with the greater pace. But on January 3, one more problem. And what's that? That they started feeling that there is a tremendous leak in the ship, that the water is coming inside again from somewhere. Now he went and checked, the captain went and checked all the corners, all the base areas of the ship, and he found that the main rib of the ship is broken, and from that particular area the water is coming inside. Let me explain you. The captain went and checked कि कहाँ से पानी आ रहा है, and he found that main rib area broken है और वहाँ से पानी अंदर आ रहा है. And now he is sure of the fact that obviously we know उसने बहुत सारी जगह हीलिंग करी है, but वो कपड़ा कितनी देर तक चलेगा? ज़्यादा देर तक नहीं. Now the main rib area is broken. अब तो साफ समझ आ गया, जब नीचे का बेस टूटने लग गया तो आपकी शिप कैसे चल सकती है. Now he is sure of the fact that they would not be able to reach Australia. बिकॉज उनका तो अभी जो रूट चल रहा था वो ऑस्ट्रेलिया पहुंचने का था, एंड दे आर समवेयर इन बिटवीन. इतना सारा डिस्टेंस अभी कवर करना है, एंड विद दिस ब्रोकन शिप दे वुड नॉट बी एबल टू. नाउ ही वॉन्ट्स टू थिंक ऑफ प्लान बी. I once again say, all of you please try to look at his courage. A person with a broken rib cage, with broken teeth, with mouth full of water, with such emotional distress, is thinking of plan B. Such a courageous man he is. Now he started searching of some nearby place where they could go to save their lives. And after checking all the maps, because they were getting no reply from the mayday calls, so he started using his wits and started searching the maps that he was having. And once he searched the maps, he could find that there is an island nearby, that is Isle Amsterdam, जो कि एक फ्रेंच साइंटिफिक बेस था. कुछ 100 किलोमीटर्स अवे था वो. But then the question is, would this ship be able to sustain for a few 100 kilometers or not? बहुत मुश्किल है जिस हिसाब से डैमेज दिखाई दे रहा है. What do you think about it? क्या ये शिप इनको आइले एम्स्टरडैम तक पहुंचा देगा? But then the problem is not only that. The other problem is that they don't even have any navigation
system with them right now, because everything has been damaged because of that disaster. Their compass, main compass is not working, their electrical compass is not working, they have no magnetic devices to help them with the direction, they're getting no replies of the mayday calls. So now they're in a position where they don't even know in which direction they are. जब आप बिल्कुल समुद्र में बीचों बीच हो, आपको कुछ नहीं पता क्या नॉर्थ, क्या साउथ, क्या ईस्ट, आप कंपास की हेल्प लेते हो, राइट? बट देन दे हैव नो सच इक्विपमेंट्स टू हेल्प देम. तो वो कैसे समझें? लेट्स से वो मैप में देख भी लेंगे कि आइले एम्स्टरडैम किस तरफ है, कि उन्हें ईस्ट की तरफ जाना है, बट किधर ईस्ट है वो इनको कैसे पता चलेगा विदाउट द हेल्प ऑफ अ कंपास? Now that's the biggest problem or the dilemma they were in. What to do next? Problems एक के बाद एक इनके साथ बढ़ती ही जा रही हैं. Now on January 4 and January 5, it's been 36 hours of continuous pumping. I am really amazed and you know, hats off to this man. एक कट लग जाए बंदा पूरा दिन सोता रहता है, एक हड्डी टूट जाए बंदा 3 महीने 2 महीने के बेड रेस्ट पे चला जाता है. सारी हड्डियां टूटने के बाद 36 आवर्स कॉन्टिन्यूस पंपिंग ऑफ वाटर. Simultaneously he is using his wits, he is checking on maps, he is making plan B, he is checking for the islands nearby. Amazing, hats off. Now 36 hours he pumped all the water out of the ship, and after that उसने क्या किया? He hoisted the storm jib, headed to the डायरेक्शन आइलैंड. उसने स्टॉर्म जिब को थोड़ा सा होइस्ट किया. नाउ जो अब आइले एम्स्टरडैम के बारे में सोच लिया, उसकी तरफ जाने के लिए स्टॉर्म जिब को सेट करा, एंड देन जो भी डायरेक्शन थी उस तरफ अपनी शिप को हाइपोथेटिकली मोड़ा, बिकॉज ही इज़ नॉट श्योर ऑफ द एग्जैक्ट डायरेक्शन. सो ही जस्ट यूज्ड हिज विट्स, दिमाग यूज़ किया, इंटेलेक्ट यूज़ किया, एक हाइपोथेटिकल अजम्पशन लगाई और भगवान का नाम लेके शिप को उस तरफ मोड़ा. बट फिर से मैं कह रही हूँ, प्रॉब्लम्स अभी ख़त्म नहीं हुई दोस्त, बढ़ती ही जा रही हैं. देन ऑन 5th जनवरी फिर से ब्लैक क्लाउड्स, वैसे ही जैसे उस दिन हुआ था, तूफान से पहले की शांति, एकदम काले बादल हो गए एंड सब शांति हो गई. फिर से वैसा ही हो गया, काले बादल छा गए और पहले तो बहुत तेज़ तेज़ विंड स्टार्ट हो गई होना, 40 नॉट स्पीड से विंड चलने लगी एंड सिचुएशन और ज़्यादा ख़राब होती गई. नाउ जब शिप ठीक था तब इतनी स्ट्रॉन्ग नॉट्स की विंड बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था. अब ये टूटा फूटा शिप कैसे इतनी स्ट्रॉन्ग वेव्स को बर्दाश्त कर पाएगा? अब आपको क्या लगता है, क्या प्रॉब्लम और बढ़ने वाली है? इस बार ये बच जाएंगे क्या? चांसेस तो कम लग रहे हैं. लेट्स सी. बट सी कहते हैं अगर परिवार के सब साथ हैं, इफ़ यू हैव अ गुड सपोर्ट सिस्टम विद यू, इफ़ यू हैव द ब्लेसिंग्स और द गुड विशेस ऑफ योर किथ एंड किन्स, देन एवरीथिंग इज पॉसिबल ऑन दिस अर्थ, राइट? सुना होगा आपने भी. सो दैट काइंड ऑफ मैजिक हैपेंड with them as well. The support that they gave to each other, how even children supported the parents at that particular time, helped them to come out of that crisis. See how now we'll see an exemplary example of courage where Jonathan, the son, he showed rare courage. Like when the dad went to meet Jonathan and asked him about his well-being, Jonathan ने क्वेश्चन पूछा पापा से, क्या हम मरने वाले हैं? Now this is a very emotional moment for a dad, कि एक बच्चा पूछ रहा है क्या हम मरने वाले हैं. बेचारा बहुत परेशान हो गया कैप्टन, एंड ही डिडंट नो व्हाट टू रिप्लाई. सडनली जॉनथन का आंसर आया, डैड वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई if we can all be together. I hope you could relate it to the topic, to the title, to the name of the chapter. It is a saying, a line being said by Jonathan. एक छोटा सा बच्चा अपने फादर को बोल रहा है कि मैं मरने से हम नहीं डरते अगर हम सब साथ हैं. Can you beat that? An exemplary courage and you know, an example for all the people
who feel themselves trapped in some situations and who are coward and who you know who have some kind of fears in their hearts or in their minds. Take some strength from Jonathan. The biggest fear is the fear itself. इसने इस बात को प्रूव किया और एक पापा को नया सा करेज दिया, क्या ये बोलकर कि मैं नहीं डरता, हम नहीं डरते, इफ़ वी आर ऑल टुगेदर, सो यू गो एंड वर्क हार्ड ऑन इट, मर भी गए दैट डजंट मैटर. आफ्टर दैट एक न्यू जान, एक नई जान, अ न्यू रे ऑफ जेस्ट came in protagonist's or captain's heart and mind, and he thought अब तो मुझे बच्चों को बचाना ही है. जब बच्चे इतना करेज दिखा सकते हैं तो मैं कैसे डर सकता हूँ. This helped the captain with a new ray of zest and new motivation, and 6th January को वो फिर से लग गया काम में कि जितने भी रिपेयर्स, जितने भी उसको कुछ इक्विपमेंट्स, जैसे भी वो चाह कर पा रहा था अपने शिप को मैनेज करने में लगा हुआ था. एंड ऑन 6th January फिर से एक बार अपने वाइफ के साथ विद होल्डिंग हैंड्स दे बोथ वर सिटिंग ऑन द डेक एरिया ऑफ द शिप एंड दे वर अ बिट पेट्रिफाइड. थोड़ा सा डरे भी हुए थे, समझ नहीं आ रहा था वेदर दे विल बी एबल टू रीच टू द पर्टिकुलर डेस्टिनेशन और नॉट. बट देन ही वेंट टू द चार्ट रूम, he did some calculations, recalculations, and he found that they were somewhere 150,000 kilometers in between the ocean, and they are looking for a 65-meter wide island that is quite nearby, that is Isle Amsterdam. Suddenly वो उसके लिए calculations कर ही रहा था, preparations कर ही रहा था, expectations लगा ही रहा था कि सू की एंट्री होती है, सुजैन, राइट, हिज डॉटर. एंड वंस अगेन जहाँ जहाँ इनका करेज थोड़ा सा कम होने लगता है, बच्चे आते हैं और एक अलग सी रे ऑफ मोटिवेशन और होप दे जाते हैं. अब सुजैन की एंट्री ने फिर से इसका मोटिवेशन और करेज बढ़ा दिया. कैसे? दैट सुजैन हैज़ प्रिपेयर्ड अ कार्ड फॉर डैडी इन विच उसने कुछ कैरिकेचर्स बनाए, मतलब ड्राइंग्स टाइप बना के, हम किसी की पोर्ट्रेट बनाना चाहते हैं ना, ड्राइंग फॉर्म, आप समझ सकते हैं, जैसे बच्चे बना देते हैं, मम्मी एंड फादर, राइट. सो दैट्स हाउ he was like very happy and motivated when he saw the card that was being made by Suzanne. In that card there were caricatures of mother and father. उसमें लिखा हुआ था see some funny people, और उनके साथ में एक मैसेज लिखा हुआ था Suzanne ने, that I love you both and thank you for all the support that you have given to us, and also let's hope for the best. Now this let's hope for the best and that love you acted as a magical line that doubled or multiplied the motivation level of the father, and once again he started working hard. He although the main compass was lost, but then he could make no magnetic corrections, but then he went and made calculations again and again, and he found that there is a ray of hope. And उसने फटाफट अपने साथ जो 2 प्रोफेशनल से उनको बुलाया और बोला 185 डिग्रीज एट अराउंड 2 PM पे शिप को थोड़ा सा आपको डायरेक्शन को चेंज करना होगा, कि 2 बजे के आसपास 185 डिग्रीज पे शिप को मोड़ना. अकॉर्डिंग टू माई अजम्पशंस हम शायद 5 बजे तक एक्सपेक्टेड है कि आइले एम्स्टरडैम पहुंच जाएंगे. नाउ विद नो मैग्नेटिक corrections, with no main compass, all the directions that he was trying to calculate were just speculations. But then as we have discussed, and अभी तक आप भी समझ गए हो कि दिमाग से बहुत तेज है, तो कुछ सोच समझ के with the help of maps, with deep thorough study, बच्चों की मोटिवेशन से जो भी उसने एक लास्ट assumption लगाई, वो क्या, कि अब 2 बजे के आसपास हमें अपने शिप को 185 डिग्रीज पे मोड़ना होगा, एंड मोड़ते ही एक्सपेक्टेड है 5 o'clock हम अपने आइलैंड पे पहुंच जाएंगे. एंड इतना करने के बाद ही डोज्ड ऑफ, गहरी नींद में सो गया, बिकॉज कितने दिन हो गए हार्ड वर्क करते हुए इन दैट फिजिकली हैंडीकैप सिचुएशन. इट वॉज फॉर मी इट वॉज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल. But then he showed his valor, but then also human body यार थकता है. So he got really tired
एंड थोड़ी देर के लिए उसने सोचा सो जाता हूँ, बिकॉज अब कुछ करने को नहीं है. 3 बजे 2 बजे अगर लैरी या हब में से कोई एक शिप को टर्न कर भी देगा तो अब 2-3 घंटे है, मैं अब मेरे शरीर कह रहे हो कि बहुत ज़्यादा थक चुका है. नाउ आई नीड अ रेस्ट. एंड 5 PM वो सो जाता है. वो सो जाता है. एंड एक्सपेक्टेड था उसको कि 5 PM तक हम वहाँ पहुँच जाएंगे, कि मुझे तब उठा देना. नाउ जैसे ही उसकी नींद खुली, टाइम देखा 6 बज रहे थे. इट वॉज 6 PM. दैट सिंपली मीन्स कि इसकी डायरेक्शंस गलत थी, बिकॉज इट वॉज ऑल अ स्पेक्यूलेटेड अजम्पशन कि उस तरफ मुड़ना तो शायद हम एम्स्टरडैम पहुंच जाएंगे. ही वॉज नॉट श्योर, बिकॉज कुछ डायरेक्शंस नहीं थी. उसने अज्यूम किया था कि उस तरफ ही होगा. जैसे ही 6 बजे ही गॉट रियली डिप्रेस्ड. उसको लगा कि मैंने जो अजम्पशंस लगाई थी वो गलत थी, शायद हमने गलत डायरेक्शन में शिप मोड़ लिया है. अब तो बचने का कोई चांस नहीं, बिकॉज दैट एम्स्टरडैम आइलैंड वॉज द ओनली रे ऑफ होप. 6 o'clock जब डिप्रेस्ड था, बहुत परेशान था, अपनी अप्रोचिंग डेथ सामने देख पा रहा था, सडनली बच्चे आए एंड दे हग डैडी एंड दे सेड दैट डैडी यू आर द बेस्ट वन ऑन दिस अर्थ, नॉट ओनली द बेस्ट डैडी बट ऑल्सो द बेस्ट कैप्टन. डैडी बोल रहे हैं हाउ कम आई एम द बेस्ट कैप्टन, इवन आई एम नॉट द बेस्ट डैडी, बिकॉज मेरी वजह से तो अब हम सब मर जाएंगे. बच्चों ने कहा नहीं, सामने देखो एम्स्टरडैम आइलैंड. एंड कैप्टन वॉज लाइक रियली हैप्पी. फाइनली वो अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गए. आफ्टर सो मेनी हर्डल्स एंड ऑब्स्टेकल्स they could reach their destination. They managed to reach Isle Amsterdam. That is the victory. From this story, I hope you all have got a lesson that how if you fight with something with tooth and nail, with tenacious efforts, with courage, conviction and good presence of mind, yes of course, and also with the support and strength of your family, one could successfully come out of any ordeal. I hope you all have learnt a lesson that what we all need to do in our lives, we need to have courage, grit, conviction, use our mind in a proper way, and yes of course we need the strength of our family. This is something, if we have a grip of, then we can achieve anything on this earth, right? Thank you so much. I hope you all are motivated after having a glimpse of the courage and the grit being showed by the captain here in the chapter, and not only by the captain, by his wife, by Jonathan, by Suzanne. So if the children of 6 and 7 years of age can show such kind of courage that they were not afraid to die, then why can't we? We must follow our passions, work hard for that, show courage, and especially right now, my only motivation behind this is you must show your courage and conviction, grit in your studies. Nothing is impossible. You can achieve good marks. You can get to your goals. You can achieve anything on this earth if you will work hard. Just assiduous work, efforts are required. Thank you so much. Hope you'll work hard. Hope you are motivated. Hoping to see you all soon. Have a good day and don't forget to keep yourself safe. Thank you so much. Take care and keep stalking.